Everyone, welcome to this next topic, which is about an important type of question which can definitely come in the exam, which is writing the prototype. What does writing the prototype mean? सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको मेथड डेफिनेशन लिख देनी है. व्हाट इज मेथड डेफिनेशन? मेथड डेफिनेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड, जिसमें क्या क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द मेथड एंड उसके अंदर के पैरामीटर्स. वो पहली लाइन चाहिए इसमें. That is what a prototype is. Let's see you're using the first question as an example. Write a method named calculate. Method का नाम पता लग गया क्या? Calculate. Takes two integers. पैरामीटर में क्या होगा, इसके ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, दो इंटीजर होंगे. एंड टेक्स टू इंटीजर्स एंड इट रिटर्न्स अ नंबर. रिटर्न टाइप क्या होगा, नंबर का टाइप का होगा. नंबर क्या क्या हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है. रिटर्न्स अ नंबर दिया हुआ है बस हमें. तो अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं. लेट्स डिफाइन एक्सेस स्पेसिफायर एज पब्लिक. जिसको कंफ्यूजन है व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक वगैरह, ये मैं अपने एक पहले लेक्चर में कर चुका हूं. रिटर्न्स अ नंबर, तो न्यूमेरिक रिटर्न टाइप इंट ले लिया है मैंने इस केस में. नेम दे रखा था कैलकुलेट, वो कैलकुलेट एज इट इज. टेक्स टू इंटीजर. टेक्स मतलब इट कैन हैव two variables as parameters which are integers. तो int a int b, ये मेरा मेथड डेफिनेशन प्रोटोटाइप का हो गया. रिटर्न टाइप इंट, टू इंटीजर पैरामीटर और नाम कैलकुलेट. वेरी वेरी सिंपल. ये हो गई मेथड डेफिनेशन, यही लिखना था बस. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. राइट अ मेथड नेम्ड डिस्प्ले दैट टेक्स नो पैरामीटर्स. मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आएगा. रिटर्न्स नथिंग. इससे हमें क्या समझ आता है कि भाई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड आएगा. लेट्स सी. एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लो, प्राइवेट लो, कुछ भी लो, उसमें लिखा हुआ नहीं है. वॉइड क्यों लिखा, क्योंकि रिटर्न्स नथिंग लिखा हुआ था. देन उसका नाम लिखूंगा मैं डिस्प्ले, राइट. बट इंपॉर्टेंट चीज टू नोट, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, टेक्स नो पैरामीटर्स, ब्रैकेट खाली आएंगे. सिंपल मेथड डेफिनेशन मैं लिख चुका हूं. वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स. नाउ लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट के. Let's look at some more examples so that we have covered the whole topic अच्छे से. Next type of question, next question that we can be asked is write the prototype of a method. Okay, convert. Write the prototype of a method convert. So basically this is the name of the method that receives a character and returns true if it is capital and false if it's not. Right. So basically what is given, name of the method is convert. What does it receive? It receives a character. तो parameter में क्या है, character type होगा variable. A character, एक character it receives and returns true if it's capital and false if it's not. Don't worry about what is going to happen inside the method. हमको what do we need to worry about? Only writing the prototype, only writing the first line. We don't need to worry about how do we do this, how do we know if it's capital or not. Capital means uppercase, okay, if it's uppercase or lowercase or not, no need to worry. Only worry about writing the first line, that is method definition. Only the first line or prototype, that is what we have to write. Let's try to write. Okay, access specifier, I'm by default map, I prefer writing public. If it's not written, so I'll write public. Now what comes next, return type. What is the return type? Returns true or returns false. What is this, true or false? What is this data type? It is a boolean data type, if you remember, boolean data type. So return type will be boolean for me in this case. Then I write the method name, which is convert, right? And it was given, what does it receive? It receives a character. It receives a character. So maybe char c. Simple. And I'm done with the method definition. I don't need to worry about ये कैसे होगा, ट्रू इफ कैपिटल नहीं. मेरे को आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट डज इट रिटर्न. इट रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए आई रोट बूलियन, आई रोट द नेम, आई रोट व्हाट इज इट रिसीविंग. इट इज रिसीविंग अ कैरेक्टर. सो दिस बिकम्स माई prototype. Very very simple. Now let's look at the next one. A method called sum, the name of the method, that
टेक्स एन इंटीजर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ रिसीव इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट टेक्स एन इंटीजर. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ द लैंग्वेज कैन चेंज इन द क्वेश्चन एज वेल. इट टेक्स एन इंटीजर मतलब एन इंटीजर मतलब एक इंटीजर इसका पैरामीटर होगा, वन इंटीजर array. यहाँ पे see what kind of mistake I was going to do. An integer, no, it's not an integer, it's an integer array that it's going to receive. Okay, and then it returns their sum, right? One integer array it receives and returns also a sum. So let's define this method. Let's write the prototype. Public, what is the return type? It returns their sum. Let's take integer. I can also take double or float, both correct, but जो भी numeric data types हैं, I can return those. So I'm taking integer. The name of the method is itself sum. What is it receiving is interesting now. It's receiving an integer array of numbers. So I need to define an array. Int, how do we define an array? Int, maybe num. This, I'm sorry, इस writing गंदी हो गई, मैं ठीक कर रहा हूँ. Int num. This is receiving an integer array, right? It's returning their sum. The name is sum. No need to worry about how will I do this. I just had to write the prototype or the first line. Very straightforward, very easy and very simple. I think this should be very clear कि अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. I just need to write the method definition. If you are still confused, mind you, कि int क्यों आया, boolean क्यों आया and क्या एक parameter क्यों आया, then you have some basic misunderstanding, my friend. Then you will have to see my whole series of मेथड्स का जो वीडियो है. देन यू विल हैव द क्लैरिटी कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है. अगर उस लेवल के डाउट्स हैं तो आई वुड सजेस्ट यू लुक एट माई वीडियोज फ्रॉम द मेथड्स का प्लेलिस्ट. देन दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज व्हाट. बट अगर वो आपने देखा है देन दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.